Saurashtra area. Saurashtra. So I say South Gujarat means the Surat and the downside matlab niche Okay. wala part. Below Surat is South Gujarat. Yes, sir. Yes. Surat, So Valsad And and so everything. this Porbandar and all this Dwarka are the Saurashtra area. Matlab, okay. Saurashtra we can region. say So Kutch, Saurashtra, Saurashtra southwest area. North, North. East, and I guess South. So do this Yes, part sir. East Gujarat, Central Central, Gujarat. Central. Ahmedabad is Central Gujarat. Okay. So uh, this Varoda or Vadodara, how do you pronounce it? Uh, Vadodara. Vadodara. Okay. So this part comes under Central Gujarat. Is that so? Sir, it's called Charotar region, the Anand, Kheda, and the Vadodara. Okay. So the Narmada, the Statue of Liberty, Statue of Yes. Unity. Sorry, the Statue of Unity is in what region do you call it? Charotar. Charotar Vilavili. Okay. Okay. Understood. Okay then. So anyway, so we were discussing about these things mainly in the last week. So now I will move on to the last part of this presentation, Environmental Protection Acts. So this part is remaining. So there are various acts which has been enacted by the government of India to help protect the environment. So acts are required because they are basically laws which if people break, then they can be punished. So such laws, such acts uh, was very much important to protect the environment because people can not always be made conscious just by advising. Sometimes you require very strict rules. So Wildlife Protection Act 1972, which has been amended multiple times, 83, 86, and 91. You may check whether there is any further amendment now after 91. So this act was enacted for protection of wildlife, wild animals and birds. So it provides for the constitution of a wildlife advisory board, appointment of chief wildlife warden. So these kind of posts can be enacted by the state government for the protection of wildlife. So the powers are given to the state government, they can do it. Regulation of hunting of wild animals and birds, hunting of various kinds of uh, nearly extinct species is prohibited and it's illegal. So for that, you can construct sanctuaries, national parks, biosphere reserves. Then you have wi- sanctuaries are basically bird sanctuaries and wildlife sanctuaries. So such kind of things are areas are demarcated and they are protected by Indian Forest Service officials. So similarly, there is another act which is the Forest Conservation Act, which does not deal with animals and birds, but it deals with the forest itself. You are not allowed to build a house within the forest area. You are not allowed to use the resources of the forest area. Okay, so there are various zones actually. The core zone is completely restricted from any kind of human movement. Then there are multiple buffer zones. At the outer rim, people can live and they can sustain on the uh, forest resources, but they cannot go inside. So these acts provide schedule for conservation of forests under which no forest land or any portion thereof may be used for any non-forest purpose without prior permission of the central government. All power lies with the central government and no state government or any other authority has the right to take any decision. So this act gives the power to the central government specifically. Then we have Water Act of 1974, which is amended in 1988. I will suggest you all to go through these acts, download the PDFs, and see if there are any further amendments. There could be more amendments later on. So this act is to control water pollution and uh, enact fines, impose fines on various industries, or
levy some kind of duties to various industries if they are uh, discharging various kinds of pollutants into the water bodies, natural water bodies. So this act is in 1974. There is another. This is Prevention and Control of Pollution Act in 1974. Then Prevention and Control of Pollution (SES) Act. So this actually is a kind of money that has to be paid by the industry. So one is prevention, and the other one is imposing cess duties. So it empowers Central Water Board to collect cess on water consumed by industrial establishment. If you are using water, if you are polluting water, you have to pay money. Okay. Air prevention and control. This provides for prevention, control, and abatement of air pollution. So this act was first enacted in 1981, and then it has been modified in 1987. But see, air pollution is a very burning issue uh, all over the world and obviously in India as well. So if you check, you might find further notifications and uh, amendments that have been come up after 1987. We are not still stuck into 1987, so there could be more, rules that have been modified uh, in future. So, Environment Protection Act is an kind of an overall mandate given by government uh, or has to be followed by the government to protect the environment. It was enacted as per the spirit of Stockholm Conference of 1972, and the purpose is to control air pollution and all other kinds of pollution. Various kinds of technology should be developed to protect the environment, reduce greenhouse gas emission, etc. So all these kinds of things are there. So these slides tell you only a very small part about the acts. Okay, if you want to understand more about it, you have to go through various kinds of literature. Especially, you can find these things in Government of India websites. So, as you know that all your exams are uh, multiple choice questions, so you won't have very difficult questions out of it. But I will urge you to go through the manuals, through the documents, which gives you details about the acts. You'll get some idea. May watch some YouTube videos also. Various kinds of UPSC exams and other government exams require information about all these kinds of acts. Okay, so what you can do is you can watch some good YouTube videos and you'll get a gist about various kinds of acts and regulations. For your exam purpose, it's not needed, but you can obviously learn more by watching those videos. Environmental ethics. So this is a generic statement. Some generic statements are there about what exactly ethics means and what are we supposed to do with regard to environment. So environmental ethics means your way of lifestyle which protects the environment, which conserves the environment, okay, which does not pollute the environment. So such kind of day-to-day lifestyle, day-to-day activities can be called as environmental ethics. So from an individual level, what can we do? From an industrial level, what can we do? How does a certain organization uh, deals with various kinds of sources of pollution from their organization? How do they reduce it? How do they protect the environment? So such kind of things can be called as environmental ethics. So our ethic is our way of doing things and is a direct result of our natural environment. So the way we treat our environment, the way we get back. So these kind of things you all know. So basically what you have to understand here is that what's our lifestyle? How do we deal with uh, day-to-day activities to keeping environment in mind? Okay, so that is basically environmental ethics. So in the ecological context, such maladaptation results in one of the two consequences. If we are not protecting the environment, so the organism dies out. The most vulnerable organism are the first which fails to survive.
The organism evolves to form and character where it once again is compatible with the natural environment. So maybe sometimes some organism might fight it out and they may survive. So, but their characteristics is going to change. But those who survive or those organisms which survive are the ones which are the most adaptable creatures. But most organism actually finally dies out. Whoever is the most vulnerable. Even if you look at human being, we are learning to adapt. That is true. New kinds of uh, microorganisms are affecting our day-to-day life. Uh, this coronavirus is also a result of human interaction with the uh, wild. The virus may be lab produced, but coronavirus has been there since a long time. It was not that contagious before, but now it has become very contagious. So the point is now we have learned to adapt with coronavirus. So something new may come up. So we are also adapting from time to time. So this is what he's telling. The organism evolves to form and character where it once again is compatible with the natural environment. This can also happen. Assuming that we choose the latter course, how can this change in character or ethic be brought about? Uh, Sometimes now we have learned a lot of things because of this pandemic. Some good things have come out of it also. We have learned to adapt with the. We have learned to use mask more frequently than we used to use before. Various kinds of things. It has also created problems. You know that disposing masks have created a huge nuisance, and some things we have learned for good, and some things we have done to deteriorate further our environment. So, how can we make our lifestyle more, uh, more adaptable? Sir, Uh, yes, tell me. sir, sir, in that organism dies out thing, have you talked about the? Are you just basically defining natural selection as a Yes, new? you can call it. Basically, the one who are not able to sustain the changing environment. So such organism dies out. So natural selection is a way you can explain. Obviously, that's correct. So Okay, okay, sir. but here we are more focusing on the second point because we are talking about environmental ethics. So if some organism doesn't die out, and if it survives, okay, and let us talk about human being specifically. So if we are suffering and if you're learning to adjust our lifestyle, so you cannot expect from any other organism to be ethical. They do what they have to do for survival. What we do is we just don't do something for survival. We have other demands also. We have greed. We have the target of earning more money, etc. So those kind of things are always detrimental to the environment. But how can we adjust our lifestyle so that the environment can survive along with us? Because we are not able to survive without having a healthy environment. So how can we adjust our lifestyle? If we evolve in that way, then you can say that environmental ethics have gotten ingrained in our day-to-day lifestyle. But it is only a statement and the reality is much different. We all know. Very few communities all over the world are actually living a lifestyle which helps conserve the environment. And when I say very few communities, I am not talking about the people who are rich or people who are more educated. There are many communities who have always respected the environment. In India, we have various such tribes and communities. Many educated people are also nowadays helping others and helping themselves to conserve environment. This kind of news you always come up with that some people have revived various rivers and lakes and solved water problem in their villages, etc. So these activities are the best example you can say with regard to environmental ethics. Okay, so these kind of things are actually summarized here. The acceptable system is one in which we learn and attempt to share our exhaustible resources to regain a balance. How can we balance? Uh,
whatever we have, how can we use it judiciously? You see, coal is not going to exhaust in a very short amount of time. Maybe it will go on more for decades. But the problem is, by that time, we are going to change our climate so drastically that there will be no way we can come back. We have to learn to live with that hot earth compared to the earth that we have now. So my point is, uh, maybe it will be even difficult for us to survive in such environment. We will learn to adapt, that is true, but many organisms will not be able to survive. So they are going to perish. And it actually, destroys the ecological balance. There is a food chain, and if you take any organism out of it, it disturbs the whole food chain. So when a certain species will perish, it is obviously going to affect the food chain. Such kind of things have to be kept in mind, and so climate change and global warming has become such a burning topic. Uh, we can always argue that it's a burning topic, true, but the one who are suffering are still suffering. There is no change coming up. So changes are not always brought about by large organizations and government. Sometimes we have to do it on our own as much as we can. So there are many such stories out there. You don't even have to look outside India. There are many stories within India as well. So to make you aware about all these things is the most important thing. What can you do from your end? So these are the things. The points are pretty understandable. We must not generate and release substances, materials in the environment that cannot be reincorporated without damage to the natural system. So you are polluting, and then again you have to, fight to reduce pollution. You are creating a certain chemical to make a certain product. Let's say shampoo. That chemical was not there, but you have mixed various kinds of things and you made that chemical, and now that chemical is polluting the environment. So the earth would not have polluted it by itself, but you are combining various kinds of non-polluting items and making an new item, which is going to pollute them. And again, you are fighting to take that pollutant out and recycle it. So sometimes it would seem like a nonsense, right? You have ingredient A, B, and C. None of the three compound pollutes the environment, but you are such a person that you require a combination of A, B, and C so that you can live a better life. Okay, so you have lived your better life, and you have created this mixture of A, B, and C, and you have released it into the environment, which is now polluting the environment. And then after a few days, you are going to say that ABC is polluting the environment. So let us take it out of the environment by some pollution treatment. So you are going to treat it out, and then again you are going to, try to contain it, spend more money on containing it. So if you look into the whole story together, had you not even created the compound, which is a mixture of A, B, and C, you would not have had to go through all this nonsense. So is it so necessary for us to combine A, B, and C and make this polluting compound, or can we come up with something else which will do the job of A, B, and C, a mixture of A, B, and C, but again it will not pollute the environment. So if you start thinking that way, we may not be 100% successful, but at many places we may come up with products which is not polluting the environment. So पहले pollute करो फिर साफ करो, इससे तो pollute ही ना करो. Is this not a possibility? It is also a possibility. If you think that way, if an industry thinks that way, if a person thinks that way, they do not buy polluting substances, let's say. So these activities can be called as environmental ethics. Okay. So the recognition of for such adaptation. Adaptation means to adapt to the environment and do what is best for it. As a means of survival, for care and concern for environment has developed into what we call environmental ethics. It is the moral responsibility of every individual to develop and act by this environmental ethics. Okay. So these are some things I had to share with you. So now I want to tell you all that first of all, this is the end of the course. You will have all your questions on additional test from these things only. Now I have seen that many people
have not yet joined Google Classroom yet. And some of you have joined Google Classroom, but you have not yet submitted a single assignment. So this is really pathetic. I'm going to call a few names just to remind you that you have to make your submissions quickly. So, roll number 17. Are you here? Roll number 17. Kuldeep Singh. I don't see 17 here. Okay. Then 21. 21 is gone. There is none. Then 41. Anish Dhawad. 41. Are you here? No. Not present. One zero four. Mauli. 104. Mauli is also not present. So these people have not yet accepted the invitation. These names. And some of you have not even submitted a single assignment. Interesting thing is the names I'm calling are not even present. 94, 96. 96 is present. 96, roll number 96. Unmute करो. विनीता. 96. Yes, sir. तुमने कोई भी असाइनमेंट जमा क्यों नहीं किया? Sir, actually I made on paper every assignment. फिर सर Okay. बाद में बोला कि ये असाइनमेंट करना है, पेपर पे नहीं करना। कोई बात नहीं, तुम जो भी लिखे हो तुम्हें अपलोड करना होगा ना गूगल क्लासरूम पर, जी सर। तो कर देना। तो अगर बना लिए हो तो सारे के सारे अपलोड कर देना, है ना? ओके सर। हाँ, मैं उन्हीं का नाम बुला रहा हूँ जिनका एक भी असाइनमेंट सबमिशन नहीं हुआ। ऐसे अगर देखने जाओ कि किसी का 1 हुआ है, किसी का 2 हुआ है, तो ऐसे और भी नाम्स आए, और भी नेम आएंगे। ओके, सो आई एम नॉट कॉलिंग ऑल ऑफ देम, बट जस्ट डू चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट सबमिटेड येट। अच्छा, अनंत शुक्ला तो प्रेजेंट हो। अनंत, अनम्यूट करो। यस सर। तुमने ट्यूटोरियल क्लास नहीं किया एक भी, तुमने नोटिस किया है? यस सर। क्यों? सर मैं अब कर दूंगा। नहीं, ट्यूटोरियल तुम क्लास ही अटेंड नहीं किए। ऐसा सर क्यों? कर रहा हूँ। कर रहे हो बोलने से तो नहीं होगा तुम्हारा क्लास। हाँ, 2 ही बस क्लास तुम किए हो, ऐसा तो करने से कैसे होगा? असाइनमेंट्स जमा किए हो, तुम्हारा क्या है स्टेटस? 101। तुमने असाइनमेंट बस एक ही जमा किया है, तुम्हारे और 4 असाइनमेंट्स बाकी। यस सर, वो मैं कर दूंगा। हाँ, एक और मैटर है, तुम्हारा सेशनल एग्जाम पे मार्क बहुत कम आया है, डू यू नो दैट? यस सर। तो अभी एडिशनल टेस्ट सही से तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। यस सर। यस सर। प्रॉपर्ली प्रिपेयर करके देना है तुम्हें, है ना? यस सर। ओके सर। और कोई हो जिनका सेशनल या फिर क्लास टेस्ट पे मार्क बहुत कम आया हो? से बोलूंगा तो कोई रिस्पॉन्ड करेगा? हार्ड टू से। अच्छा, 83 इज नॉट, 82 के बाद 84 दिख रहा है मुझे। देन 73, 73 तो तुम हो भाई। 73 अनम्यूट करो। चित्रांश 73। हाँ, तुमने असाइनमेंट एक भी जमा नहीं किया, ऐसा क्यों? तुम्हारा क्या रीजन है चित्रांश? करो करो, अनम्यूट करो, बोलो क्या मैटर है।
तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। मैसेज में लिखो क्या हुआ है। फिफ्टी ने भी बस एक ही असाइनमेंट सबमिट किया है, तुम लोग को मार्क्स कैसे दूंगा मैं? कैसे ही फेल हो जाओगे ना। महविश वो क्या क्लास में? सर उसने लेफ्ट कर दिया कॉलेज। महविश ने या किसने? यस सर, 47 रोल नंबर। हाँ 73 आज ही सबमिट कर देना। Excuse me, sir. Good afternoon, sir. I'm बोल रहा है nine. क्या? आवाज नहीं आ रहा, थोड़ा जोर से बोलो। Sir, am I audible now? Hello? 95 Yes, तुम sir. बात कर रहे हो क्या? Yeah, हाँ yes, sir. I need to ask you something. बोलो। Sir, I am late admission. First ओके and second, I have not submitted. Should I submit right now? या यू कैन सबमिट। लिंक Uh, तो है खुला, तुम सबमिट कर सकती हो। yeah, sir. I just informed you. I didn't ओके कोई submit. बात Thank you, नहीं, कर sir. देना। अच्छा क्रिश अग्रवाल रोल नंबर 83। ये बंदा तो क्लास बहुत कम ही किया है। किसी का कांटेक्ट है उसके साथ? एनीवन अमंग यू? क्रिश अग्रवाल। और मे बी इफ यू हैव हिज नंबर यू कैन सेंड मी। पहले बताओ कि उसका नंबर है किसी के पास। सर देखना पड़ेगा ग्रुप में। अच्छा देख लेना, अगर नंबर होता है तो फिर मुझे भेज देना। ठीक है, कैसे सर, मेल करूँ सर? मेल कर देना, मेल कर देना चलेगा। रोल नंबर 31 ने भी बहुत कम। रोल नंबर 34 ये स्टूडेंट है क्या? 34 हाँ 34 तो होना चाहिए। यहाँ पे है क्या? एब्सेंट है। तो एनीवे जितने लोग प्रेजेंट हो अपने अपने असाइनमेंट्स देख लेना, सारे पांचों के पांचों असाइनमेंट्स अपलोड होने चाहिए। तुम लोग को मार्किंग का टाइम आ गया है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, तुम लोगों ने किसने कितना मार्क स्कोर किया है क्लास टेस्ट में और सेशनल टेस्ट में, उसका टैब रखो। और अकॉर्डिंगली एडिशनल टेस्ट अच्छे से दो सब, ताकि तुम लोग को बेस्ट ऑफ टू करके पास करवाया जाए। बिकॉज सम ऑफ यू हैव स्कोर्ड वेरी लेस एंड सम ऑफ यू आर इवन एब्सेंट। स्पेशल केसेस भी है, तुम्हारे एब्सेंट केसेस भी है, तो ऐसे नहीं होना है। एडिशनल टेस्ट को अच्छे से देना है सबको। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें बताना था तुम लोगों को। इफ यू हैव एनीथिंग स्पेसिफिक टू आस्क मी यू कैन। Hello, sir.
Hello, sir. Sir, हाँ बोलो। सर मैं मेरा लेट एडमिशन था, मैं एक्सपेरिमेंट 1 के टाइम प्रेजेंट नहीं था तो एक सेकंड तुम्हारा रोल नंबर क्या है? 102। ओके, हाँ 102। सर एक बोलो। डाउट है मुझे। हाँ बोलो। सर एक्सपेरिमेंट 1 हमें सबमिट करना है, उसमें एनवायरमेंटलिस्ट पे अपने हमें 2 पेज लिखने हैं, तो वो हमें पेन पेपर ये लिखना है या वर्ड पे भी कब सबमिट कर सकते हैं, वर्ड में लिख के? एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 1। एक्सपेरिमेंट 1। हाँ एक्सपेरिमेंट 1 क्या था, रुको मैं देखता हूँ, मुझे याद नहीं है। पासवर्ड। हाँ इसको हैंड रिटन दे सकते हो, नॉट एन इशू, बट इफ यू वांट टू टाइप एंड गिव, दैट इज आल्सो ऑप्शन, इट इज आल्सो पॉसिबल। हमें टाइप करके भी दे सकते हैं ना? हाँ हाँ दे सकते ओके सर। सर कुछ इसमें सर। हो। एक सेकंड, 102 फिर से अनम्यूट करूँ। यस सर। थोड़ा सा रुको, मैं बाकी का कैसे सबमिशन लिया मैंने देख रहा हूँ। ओके, इट्स यस इट्स सर। हैंड रिटन डॉक्यूमेंट। ओके, तो तुम्हें भी हैंड रिटन ही देना पड़ेगा, जिससे सबसे अच्छा ओके। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट कौन पूछ रहा था? सर 97। हाँ बोलो। सर मेरा भी लेट एडमिशन है, तो मेरा भी बाकी है, मैं भी सबमिट कर दूँ ना? तो करो, अपलोड कर दो। यस सर। कितने असाइनमेंट्स तुम्हारा बाकी है, सबके सब अपलोड करो। यस सर, 3 कर दिया, फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट एंड बाकी है। सेकंड तुम्हारा बाकी है, देख रहा हूँ मैं, कर देना। यस सर। ओके। सर हाँ बोलो। तो आपने अभी सरदार सरोवर डैम के बारे में पढ़ा है, सो आई वुड जस्ट वांटेड टू टेल दैट आई माई सेल्फ आई एम अ बेनिफिशियरी ऑफ सरदार सरोवर डैम। सर अच्छा। मैं बेसिकली कच्छ में रहता हूँ, गांधीधाम। ओके। सो सर मेरे को याद है कि जब मतलब जब मैं छोटा था, तब जब ये इस पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तब हाँ हमारे यहाँ पे 2 दिन में या 2-3 दिन में एक बार पानी आता था। ओके, लाइक बिफोर क्योंकि रेनफॉल होता नहीं, हाँ, नर्मदा टैंक। बिफोर ऑल दिस, तो दो ओके। तीन दिन में एक बार पानी आता था। लाइक वो अच्छा। रेनफॉल ऑलमोस्ट नहीं ही होता था पहले। अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम रेनफॉल होना चालू हो गया है, और हाँ ठंड भी एक बढ़ने। सेकंड तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। पहले रेनफॉल होता नहीं था, अभी क्या बोल रहे हो? अभी सर क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे एक्सट्रीम रेनफॉल होने लग गया। लाइक एक अच्छा, कभी लाइक कभी लो लाइंग रेनफॉल एरिया में बहुत नी ज्यादा ही लेवल। हो जाता है। यस सर, लाइक लो लाइंग एरियाज में नी लेवल तक अब पानी भर जाता है, पहले नहीं होता था ऐसा कुछ। अच्छा, क्योंकि तुम लोग एरिड रीजन पे हो, इट्स नॉट यस इवन सर। यस सर। सेमी एरिड, इट्स एन एरिड रीजन। हाँ सर, कंप्लीटली एरिड है। लाइक जो हाँ, मिट्टी है राजस्थान वो का भी जैसा सैंडी है। डेजर्ट एरिया का जैसा क्लाइमेट है, वैसे ही तुम लोग का है। सर मतलब पूरी तरीके से सैंडी नहीं है, उसके अंदर रॉकी सा टेरेन है। लाइक आपको छोटे छोटे पत्थर भी मिलेंगे, एंड द सॉइल इज सैंडी, लेकिन वो ड्यून्स नहीं है, उसके अंदर बहुत पत्थर भी हैं। तो ओके। बेसिकली कुछ हो नहीं पाता, लाइक यहाँ पे कुछ उग भी नहीं पाता है। ओके। पॉकेट्स बनी हुई हैं जिसके अंदर एग्रीकल्चर होता है, लेकिन एज अ होल ये रीजन बिल्कुल मतलब इनफर्टाइल है। ओके, इसीलिए पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत कम है, और उन्हीं लोकेशंस पे है पॉपुलेशन डेंसिटी जहाँ पे थोड़ा बहुत कल्टीवेशन सर हो जो पाता है। कोस्ट है उधर ही ज्यादातर है। लाइक गांधीधाम, कांडला, ये सब। लाइक भुज जो है वो बेसिकली बहुत बड़ा गांव है। अच्छा। बहुत ज्यादा भुज। डेवलपमेंट, हाँ, भुज जो डिस्ट्रिक्ट कैपिटल है, वो बहुत ज्यादा उधर हम्म, डेवलपमेंट नहीं हुआ। मेन जो डेवलपमेंट है वो गांधीधाम एरिया में ही है, कॉज कांडला पोर्ट जो है उसका जो सारा का सारा वो आता है, मटेरियल आता है, वो गांधीधाम से होके निकलता है। ओके। तो उन उन रीजियन से अभी सब कैनाल शायद पास होता ऐसा है क्या? कैनल का तो नहीं पता है। लाइक अब यहाँ पे डेली वाटर आता है, लाइक हमारे जो सोसाइटी है, तो उसके अंदर हाँ। पूरा एक अंडरग्राउंड टैंक है, तो वो रखते हैं। लाइक लेकिन फिर भी अभी भी कभी कभार पानी नहीं आता है, तो जो टैंकर बुलवाते हैं, तो उससे हमारा पूरा जो सोसाइटी का अंडरग्राउंड टैंक है वो भरा जाता है। लाइक अभी ओके। भी
हमें पता नहीं चलता, लेकिन शायद अभी भी थोड़ी वाटर शॉर्टेज है यहाँ पे। तुम कौन से रीजियन से हो एग्जैक्टली बोले हो? तो मैं रहता अभी कच्छ में हूँ। ओके, नहीं कच्छ तो ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट कच्छ में स्पेसिफिक। एक सिटी है गांधीधाम, उसमें इट्स नियर भुज, 40 किलोमीटर फ्रॉम भुज। हाँ, मैं बस मैप में ही देख रहा हूँ अभी। सो गांधीधाम इज एक्चुअली क्लोजर टू गल्फ ऑफ कच्छ। यस सर, लाइक वो जो वी है वो हाँ उसके एकदम एज पे ही है। हाँ हाँ, मैंने देखा, लेकिन द थिंग इज यू पीपल आर क्वाइट क्लोज टू द गल्फ, यस सर। एंड स्टिल स्टिल वहाँ पे मतलब वो रीजियन पे बारिश उतना नहीं होता है और लैंड नो भी उतना नो सर, फर्टाइल नहीं नो है। सर। ओके, सर लैंड फर्टाइल, लैंड सलाइन है, लाइक क्योंकि बाजू में लाइन है। एकदम वो ओके है ना, तो वो पूरा का पूरा सलाइन है लैंड। ओके। तो उसकी वजह से कुछ ज़्यादा कल्टीवेशन, लाइक जो नॉर्थ की तरफ जाते हैं उधर थोड़ा सा कल्टीवेशन होता है, अभी वहाँ पे ग्रीन हाउसेस भी बन रहे हैं। लेकिन वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो नॉर्थ इंडिया से मिट्टी इंपोर्ट कर लेते हैं, लाइक उधर ले आते हैं। मिट्टी मिट्टी ही इम्पोर्ट कर देते हैं। हाँ, ओके। लाइक वो उधर से मिट्टी ले आते हैं, लाइक टैंकर्स भर के, लाइक छोटा सा अगर किसी को बनाना है 1 एकड़ का, हाँ। तो वो ट्रक में मिट्टी ले आते हैं, फिर उधर वो पूरी उस मिट्टी के अंदर फर्टिलाइजर मिलाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो तो बिल्कुल नहीं हो सकती, उसके अंदर कुछ हाँ। उग नहीं सकता। लाइक हमारे जो घर अंडरस्टूड। पे भी जो प्लांट्स हैं, हाँ, आई थिंक एक मेरा यूकेलिप्टस का प्लांट था, एंड 10 years हो गए हैं, वो अभी भी उतना ही बड़ा है। उतना ही है। वो उतना ही है, लाइक वो बेर मिनिमम जो उसको पानी मिलता है बस उतना सा ही होता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर ज़्यादा है नहीं। तो अच्छा यहाँ पे प्लांट्स बढ़ते नहीं है ना, यहाँ पे फ्लावरिंग होती है प्लांट्स में। अच्छा, तो ये सर, सब चीज। I wanted to share you something about this. सर एक्चुअली या मैं तो बड़ौदा में रहता हूँ, पर मेरी आंट वहाँ रहते हैं। तो एक्चुअली वो जगह की पॉपुलेशन भी बहुत छोटी है और गांधीधाम का एरिया भी बहुत कम है। मतलब बेसिकली वहाँ फैक्ट्रीज बहुत है, इंडस्ट्रियल एरिया है। उसके आप इंडस्ट्रियल। मतलब थोड़ा भी, हाँ, तो वहाँ मतलब का जैसे वहाँ स्टील का की मतलब फैक्ट्रीज है। एग्रीकल्चर इज नॉट द मेन सोर्स ऑफ इनकम, इंस्टेड दे हैव शिफ्टेड टू इंडस्ट्रीज। सब या क्योंकि मेन एंड इंडस्ट्री तो के सर यही लिए है कि लैंड वो क्वालिटी मतलब बहुत जरूरत नहीं होती है। हाँ, मैं अगर आंट के घर पे गया था। अब थोड़ी देर भी अगर मतलब विदाउट सॉक्स आप चलो तो आपके पैर काले हो जाएंगे ओके। ऐसे। उसका तो ये सब एटमॉस्फेयर चीजें, ऐसा है। हाँ, ये सब चीजें जो लोग वहाँ रहते नहीं उनके लिए उन चीजों को विजुअलाइज करना मुश्किल है। दैट It's इज ट्रू। very different. It's very different from your normal life. या तो so लाइक हम अगर नॉर्मल, I am basically क्या? from northeast, so rain is something which we have all over the year. ऐसा कोई महीना नहीं है जब बारिश नहीं होता है। So I will give you one simple scenario. जब कोई विंटर में कोई सेलिब्रेशन होता है कि या फिर कोई शादी होता है, सो ओपन स्काई पैंडल्स यहाँ पे कॉमनली दिखेंगे। एम आई करेक्ट? यस इन सर। इन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इवन इन महाराष्ट्र, ओपन स्काई पैंडल्स तुम्हें दिखेंगे। हम नॉर्थ ईस्ट पे कभी ओपन स्काई पैंडल्स बनाने की साहस भी नहीं करें, बिकॉज बारिश कभी भी आ सकती है। सो रेनफॉल इज समथिंग वी ऑलवेज हैव इन अबंडेंस। सो सर कभी वहाँ कभी तो इतना हो फ्लड भी जाता है। ज्यादा होता है ना। राइट क्या? फ्लड भी ज्यादा आता है वहाँ तो। हाँ हाँ, तो वही बस इसके साथ ही बोलने वाला था। सो रिवर ट्रेनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। हर एक छोटी छोटी नदी में हमेशा पानी रहता है, ऑल ओवर द ईयर। सो हमारे वहाँ पे इशू है रिवर ट्रेनिंग करना, प्रॉपर डैम्स होना ज़रूरी होता है, अदरवाइज जो पानी खेती करती है वही पानी खेती उजाड़ भी देती है। सो इट्स ए वेरी प्रिकैरियस सिचुएशन बोल सकते हैं। तुम लोगों के लिए जैसे डिफिकल्ट है क्योंकि बारिश कम होती है तो खेत उगाना बड़ा मुश्किल है। हमारे वहाँ पे लगा के हरा भरा फसल डूब जाता है इफ इट इज नॉट प्रॉपरली ट्रेंड। सो एवरी लोकेशन हैव हैज देयर यूनिक इश्यूज। सम इश्यूज कैन बी सॉल्व्ड, whereas some issues are very difficult to solve. हमारे केस में क्या है, रिवर ट्रेडिंग प्रॉपर किया जाता है, रिवर को कंट्रोल किया जाता है, डैम्स बनाए देते हो तो फ्लड से लोगों को बचाया जा सकता है। But in your places, if the land is not fertile, you just cannot make it fertile by doing some magic. It's not possible. So it's a nice thing that those areas which are not more cultivable, people have shifted to industry because industry बनाने के लिए you don't need fertile soil. So that is also तो बोल सकते हो कि गुजरात has you know
somehow managed to live with the disadvantage, and they have shifted to some other form of occupation. And so Gujarat one of the richest state है all over the India अगर देखा जाता है तो. But if you look into the amount of land which can be cultivated, शायद गुजरात में कम है compared to other states. So it's okay, good thing only. So anyway, I guess कल हम लोगों का क्लास तो है. We will have our tutorial sessions. So वैसे पढ़ाने के लिए कुछ होगी नहीं. So तुम लोगों के कुछ specific doubts हो, कुछ भी related to exam वगैरह, you can obviously let me know. So I will be there. सर अभी एक और डाउट है ट्यूटोरियल 2 के बारे में. हाँ बोलो. सर ट्यूटोरियल 2 में हमें 2 पेज की पीपीटी बनानी है. कॉस्ट 2 चीजें लेनी है हमें और उस पे फ्लो चार्ट बनाना है. हाँ तो 2 पेज हो सकती है. That's okay. ज्यादा नहीं करने ना, 2 ही पेज करने हैं ना, मतलब हाँ 2 पेजेस ऑफ फ्लो चार्ट. हाँ 2 articles चाहिए ना, तो obviously. ओके सर. ठीक है. Okay then. Any other queries? No. Okay. We will meet again tomorrow. If you have anything to ask, you can ask me at that time. That will be all for now.